I'm out. Assalamu alaikum everyone. I hope you're all good, and I hope you've all reached home safe or taken some precautions to stay safe today. I'm having this lecture recorded for the fact that I came to the university to conduct a session. So by 8:20, I was there at the flyover that connects the IOBM University, the last flyover that connects IOBM University. But some protest was held there, and there were tires being burned. There were people angry as a mob, and there was a lot of traffic congestion. So I stayed there for 10-15 minutes to analyze the situation, but I didn't feel that it's going to resolve. So I took a U-turn. Before taking a U-turn, I took out my camera to take a picture, which wasn't wise because you know what happens when such an incident gets created. Then the first thing these miscreants do is they start, vandalizing and taking people as victims. So I really don't take a picture or take out my phone or grab my wallet or go reach out my handbag, but somehow I did. And I sent a picture to the lady HOD today morning, Dr. Fariha. So she, and then I just, galloped back to the city. Just came back, and then Fahad, the class here from the class, he shared that the decision has been taken by IOBM that because of the situation, the disturbing situation in the city, the class will be conducted online. So I'm trying to make sure that the work doesn't get pended. Because last week I couldn't conduct a session because I was out. I was not in the country. I've arrived on the 23rd. So today is the third day that I'm back in the country. I have gone for my doctoral defense. So that I got passed, that I got cleared. So I'm through with one journey. So for that class, I need to make up time. And today I was determined to go, despite that Ryan did, inform us last night. But being a professor, I need to be there, my dear. I need to be there, make sure that I witness things and then come back myself. It's different for students, it's different for faculty. But nonetheless, thank you, Ryan, for giving us an update. So I hope everyone back is safe. I'm sharing a lecture today on sampling. So first we'll listen to this audio message, and then uh, I'll stop the lecture and I'll try to substantiate on the content. So we're talking about sampling today. I'm having a recording done on Zoom, and when the recording link is ready, I'll have it posted on LMS.
Okay. So what this professor is trying to tell us is the very reason why sampling is done. So it is a valid alternative to a census. Let us suppose that the population of our country is 241.9 million, right? ठीक है, ये काफी बड़ी population है, and you know that Pakistan is the sixth largest populated country in the world, right? So if you want to have a study done on Pakistan, obviously the study has to be done in a certain point in time. You have a certain calendar year marked. You need to do it in certain months. There is a certain budget that goes into it. There is time, money invested, and there are certain results that are anticipated in some frame of time. So keeping that into consideration, it's not practical to have every element or every member in the population reached out to have a say taken. Let us suppose you want to have research done on the prices of petrol in the country, and are the people satisfied with the recent prices the government has set. So you want to have a view of the entire population on it. Are people thinking that the prices are too high? They think they sit in their wallet size, they think they are average, or people have no view at all. So going out, reaching out all people in real time doesn't seem a workable idea. So what we do is we take a sample. So before we take a sample, the idea is that there are approaches we can use to take a sample. However, the call of wisdom is to make sure that whatever the sampling method you take, the sample should be representative of the population. Now, you have studied some basic statistics. You've also studied some basic maths. Okay? तो मैथमेटिक्स हमें एक्यूरेट और प्रिसाइज फिगर्स और फैक्ट्स देता है, लेकिन स्टैट्स हमें करीब करीब चीजों के बारे में बताता है, राइट? ठीक है. सो व्हेन वी आर टेकिंग अ सैंपल, वी नीड टू मेक श्योर कि सैंपल हमारा एक्यूरेट हो, उस एक्यूरेसी पे पूरा उतरता हो और प्रिसिशन हो उसके अंदर. ठीक है, हम 95% कॉन्फिडेंट हो कि जो रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 95 टाइम्स जो है वो पूरे होंगे, वही रिजल्ट्स आएंगे. तो सैम्पलिंग करते वक्त जो है वी नीड टू be very vigilant. We need to have certain reasoning why a certain sampling method has been taken and not the others. So let's move on a little and see the types of sampling strategies available to us. Okay, so next what we learn is that when we zero onto a certain population may have characteristics. The population may be homogeneous. It means that the mix consists of all people having the same characteristics, as in the population of all males. So this is a homogeneous population, or it could be population of all females. That is another homogeneous population. Or it is a population of all toddlers, again, homogeneous population, or a population of all senior citizens, correct? Or a population of all people who belong to the same nationality, that is Pakistanis. However, population could also be heterogeneous. For instance, if you look at this art here, this is the representative of a certain population. It's an abstract way of showing you something. So what I deciphered from here is that this is a population. It could be people in an abstract way, but see, these different colors show different representation of different dynamics every population may have, right? So heterogeneity means a population could be heterogeneous, where you have a population which has men, which has women, which has older, which has seniors, right? So as in Pakistan's population is a heterogeneous population by virtue of age, correct? And by virtue of life stage, some people are older, some people are young, some people are adolescents, some people are senior citizens, some are just born, some are toddlers. So we have a heterogeneous population, correct? Let's move on a little. So the population may have any dynamics. It could be heterogeneous and it could be homogeneous.
Okay, now hang on, have a look at this. This gentleman, this professor, the doctor is trying to tell us that the population behind him in the screen, it is a heterogeneous population. Why? Because the population consists of here a mother and a child. It consists of a girl, it consists of a lady, it consists of a lady, it consists of a man, it consists of a couple, right? So we see presence of lots of people in the society. So this population is a heterogeneous population, right? It is a representative of many people living in the society with their own originalities, right? So we're seeing married, we're seeing families, we see young, we see old, we see children. So this is how populations are, more or less. And our population is more likely like this. But this visual behind this doctor basically shows us that populations exist. The differences shown in the population are more in terms of gender and life stage. We can have population differences within in terms of, let us suppose, social classes, in the terms of income, in terms of the income they are having, in terms of the work they do, right? The kind of the age they have, the faith they have. So the population dynamics may vary on different parameters. This is what the doctor is also, the professor is also trying to tell us, that populations could be heterogeneous on different fronts, right? So this is a population having a lot of, I would say, it's a very different population, from young to old to men to women to married to single. It has a representation of all elements in the population. Okay, so the next thing we learn is, okay, we haven't yet reached the we haven't yet reached towards learning the hardcore dynamics of sampling, but we are just orienting ourselves with the basics and developing our vocabulary to study sampling. So what we learn next is that all members in the population are the elements. They represent the population, and our respondents of the study come from the same population. The next thing we talk about is a sample frame. Sample frame is a pool of individuals from which a sample is drawn, right? Now let me substantiate this a little. Suppose करें कि फहद जो हैं और अरीबा जो हैं, right? They come to my university, and I teach at a university. So apart from IOBM, so they come to my university and they say that, Miss, we want to conduct a research on the happiness index of faculty members. I mean, the kind of jobs they are doing, they are into teaching, they're into university teaching, so they're into academics, they're into research, and every time they have to research, it is out of research that you tend to deliver things to students. So you need to be more contemporary, right? Your knowledge needs to be more updated.
And there's lots of work from making assignments to evaluation of examination to making quizzes to delivering lectures. So it's all mental labor. So we are trying to find out, our research is to about are faculty happy with the nature of their work. So what is the happiness index? So they approach me because they know that I work there, and they want to know that Miss, we want to reach some 800 faculty members. This is the sample size we want to have, right? Let us suppose they get to know that the total population of the university of working faculty members is around 2,000 people, right? Fine. They get to know that the total population, 1 minute, 1 minute. Sorry for that. I just have some people at home. They do not know I'm in the middle of the session, so I just have to quiet them a little. So what we were discussing was, okay, there are two candidates from your class. They come to my university to have some research done on the topic that is towards happiness index of the faculty. So, so yeah. So they need a sample frame from which the sampling would be done. So sample frame is a bigger pool of representation of the population. And it is from there that the sample is chosen, right? So, so I would give them the whole list of faculty members, that there are 2,000 faculty members total, all in all, all in all. So that is the sample frame, right? Hang on just 1 minute. So that is the sample frame. Now from that sample frame, the sample frame is basically a list. It is a list of faculty members who work at the area university, right? Fine. Now from there, they are going to draw a sample of 200, correct? तो सैंपल फ्रेम में से हम सैंपल चूज करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज, पास लर्नर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या पॉपुलेशन और सैंपल फ्रेम एक ही है? नहीं है। पॉपुलेशन में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं ना, ठीक है, सही है, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले तमाम लोग पॉपुलेशन है, लेकिन सैंपल फ्रेम में सिर्फ वो लोग हैं जिनको स्टडी किया जा रहा है, जो कि इन प्रिसिशन सिर्फ फैकल्टी हैं. देयर आर पीपल ऑफ अदर रैंक्स आल्सो वर्किंग देयर, देयर आर डायरेक्टर्स, देयर आर मैनेजर्स, देयर आर अदर पीपल एज वेल, देयर इज एडमिन एंड देयर आर अदर wings of the university too. But in precision, Fahad and Laiba want to work on the faculty as respondents for the study, right? So, yeah. अभी हमने जितनी बात करी सैंपल को पढ़ने के लिए, सैंपल निकालने के लिए सैंपल फ्रेम का होना बड़ा जरूरी है, ठीक, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप एक और बात साफ करते हैं, देयर इज नो कंफ्यूजन। आमतौर पे होता ये है, आमतौर पे होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो सैंपल फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं, जो लिस्ट एग्जिस्ट करती है लोगों की, वो आमतौर पे अपडेटेड नहीं होती, ठीक है? जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है, ठीक है? किसी जमाने में टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी बीटीसीएल की, ठीक है, सही है। तो उसमें जो है आप जो है किसी का नंबर अगर ढूंढना है, अगर आपको, मुझे रायान का नंबर ढूंढना है, मुझे समीना का नंबर ढूंढना है, तो मैं डायरेक्टरी में से ढूंढूंगी, ठीक है, सही है, राइट? अब डायरेक्टरी जो होती थी, किसी पॉइंट सपोज कर डायरेक्टरी जो है वो बनी है 5 साल पहले, उसमें जो है वो अपडेटेड नंबर्स हैं टू डेट, ठीक है? अब इन 5 सालों में सपोज करें कि कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? तो डायरेक्टरी फिर अपडेटेड तो नहीं हुई ना, सही? इस तरह से सैंपल फ्रेम में बाज दफा ये एक चीज देखनी पड़ती है, ये एस्पेक्ट देखना पड़ता है कि सैंपल फ्रेम अपडेटेड है या नहीं है. द लिस्ट आई हैंड ओवर टू फहद एंड लाइबा
which is a sample frame of all faculty on board, that is 2000 in number, may have some faculty who are on the leave maybe, or who have resigned, but they are still on the roster, क्योंकि ये चीजें अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है, राइट? या हो सकता है कि जिस दिन ये दोनों रियल टाइम में यूनिवर्सिटी आए हों उस दिन शायद एक लोग एब्सेंट हो, ठीक है? तो सैंपल फ्रेम्स आमतौर पे हमें अपडेटेड नहीं मिलते हैं, हमें बहुत हद तक मतलब एक एक क्लोजर पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि हमें यहाँ से सैंपल चूज करना है, बट मेनी टाइम्स एक लिमिटेशन ये भी आती है कि सैंपल फ्रेम्स अपडेटेड नहीं होते, ठीक है? सही। या आप चाहें तो मुझसे क्लास में रियल टाइम में फेस टू फेस पूछ भी सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये बात डिस्कस करी कि सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम अ सैंपल, राइट? ठीक है, लेट्स सी व्हाट फर्दर इज देयर। This is what we've talked about, right? If you put this on a piece of paper, the population is the bigger pool. Within that exists the sample frame, and from there you draw the sample, right? So the more representation you want of the sample, the more, in the first place, you need to arrange for a good sample frame. Then sample frame is what basically a list of all the people from whom the sample would be drawn, right? Fine. If you're doing some research on women and their perspective towards promotions, and if they are treated fair at work, then the sample frame would consist of women. There won't be no men in it. The population may have men and women, right? But the frame will only consist of women, right? Okay. So be vigilant on it. सैंपल फ्रेम वो पूल है एलिमेंट्स का जिसमें से आप अपने सैंपल को निकालते हैं। Okay. So moving on, the next thing I would talk about is let's go to your LMS. Where's your LMS? Yeah. So now we've discussed some basics of sampling strategy. I'll now talk about sampling, probability sampling and non-probability sampling. These are two types of approaches available, right? Let's talk about them one by one, right? Okay. So it's slightly a broader topic, so just hang in there. I pray whatever I'm teaching is recorded, otherwise a lot of my time would get wasted. I'll have to do it again. I mean, that is not a hurdle, but I just am in the mood and the energy to teach right now. So I'll try to bring this here because I'm teaching you. Yeah, can I drag and drop this? Let's see. I'll settle that later. Let's start with probability.
Hang on. So we are now discussing the sampling methods. We have probability sampling and we have non-probability sampling. Probability sampling from probability sampling is supposed to get because, as the name suggests, that every person has a equal chance of being selected. For instance, uh, it's tea break in your class. Let us suppose we are meeting in real time. It's tea break in the class and everyone is there. Samir, Samina, Ryan, Taiba, Ariba, Fahad. I think you're 5 now. So all the entire population is there, right? Fine. And I enter the class, it's tea break, and I'm thinking of asking you all to join me for tea. So since I'm asking the entire population, right? Fine. Of students I have, and there are 5 only. So everyone has an equal chance of being selected. This is called a probability scenario. Now we're talking about probability sampling. Correct? That let us suppose the total population of class is it can be the idea could be made from 5 as well, as in if you're 5 students, but it will be easier if I increase the number for the sake of understanding. So let us suppose you have 40 students in the class. Okay, and it's tea break, and there are male female students both. 5 who I have currently, and let us suppose there are 35 more. So you have a pool of 40 students with you. Correct? So yeah. So from this 40, I intend to take some students with me. So I intend to take some 15 students with me. So basically, I'm taking a sample, right? So from a pool of 40, if I intend to take some 15 people, and all 40 are likely to be selected, then this is simple random sampling. This is the probability sampling. मैं 40 लोगों को पढ़ा रही हूँ. मेरा सैंपल मैं चाहती हूँ 15 लोग साथ लेके जाऊँ. ठीक है, सही है. तो उन 40 में से 15 फिर कोई भी बच्चे हो सकते हैं, फर्स्ट सीट से लेके लास्ट सीट तक कोई भी. हम जब इस तरह से सैंपल उठाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में से, हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक सबसे क्लियरिंग एग्जांपल है कि जहाँ पे एवरी पर्सन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. लेट्स सी व्हाट द प्रोफेसर फर्दर हैज टू से. Okay, what he's saying is that if you're part of the population, if you're part of the 40 students, then it is very likely 100% statistical, 100% mathematical, I would say, understanding that you have a chance of being selected, right? After this, you have systematic sampling. हम पहले थोड़ा सा एक आइडिया बिल्ड करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, एंड देन वी लिसन टू द वीडियो एज वेल. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या है कि सिस्टम फॉलो करते हैं. ठीक है, सही है. जैसे कि पॉपुलेशन अगर 40 लोगों की है और मुझे जो है वो 15 का सैंपल चाहिए. ठीक है, सो आई एम रीचिंग एवरी थर्ड पर्सन इन द पॉपुलेशन. एक सीक्वेंस मैंने शुरू किया है. ठीक है, सही है. वो सेकंड रो से भी हो सकता है, थर्ड से भी हो सकता है, फर्स्ट से भी हो सकता है, फोर्थ से भी हो सकता है, रूम के लाइट से हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है. तो आप कहेंगे ये कैसा सीक्वेंस है? तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आपको ये फ्रीडम होता है कि आप जो अपना फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे अपनी पॉपुलेशन के लिए, सैम्पलिंग के लिए, सॉरी, वो कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आपको कितने सैंपल चाहिए? 15 लोग चाहिए ना आपको. पॉपुलेशन कितने की है? 40 की है. ये पेज पर लिख लें अपने पास. ठीक है, सो दैट you have an understanding and you have a mental map made. So the population is of 40. You want a sample of 15. Systematic sampling में आप जब लोग उठाएंगे, when you start picking people, you are going to, let us suppose, take every third person. ठीक है, तो आपने थर्ड स्टूडेंट लिया, आपने फिर 6 स्टूडेंट लिया, फिर आपने 9 स्टूडेंट लिया, फिर आपने 12 स्टूडेंट लिया, राइट? फिर आपने 15 स्टूडेंट लिया, टिल यू गेट 15 स्टूडेंट्स एंड ऑल. सवाल यह है कि इस बात का तयन कैसे किया जाए कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप हर तीसरा शख्स लेंगे या हर सातवां शख्स लेंगे या हर चौथा शख्स लेंगे. तो ये एक नंबर से हम डिटर्मिन करते हैं, उसको कहते हैं हम के स्टैटिस्टिक. के फॉर कैंगरू, राइट? सो हमारे पास जब के कैलकुलेट हो जाता है तो ऊपर में बताता है कि हमें पॉपुलेशन में से डू वी नीड टू फाइंड आउट when we are making a sample, would we be taking every 7th person, every 11th person, or every 3rd person? तो ये it's not at your whim and fancies. ठीक है, सही है. There's a science behind, there's a statistical procedure behind. So let's see what the doctor has to say.
hang on. Now, simple random sampling, he's furthering on it. Let's try to develop an understanding. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में उन्होंने क्या क्या जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन क्लास, 15 स्टूडेंट्स आई वांट टू टेक आउट, टेक 15 स्टूडेंट्स आई वांट टू आस्क टू जॉइन मी 40। ठीक है, तो जो ड्राइंग हम करते हैं, ठीक है, सही, जो ड्राइंग का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि एक हैट में से आपने कोई भी 15 पर्चियां निकालनी। तो एक तरीका तो ये है रैंडम सैम्पलिंग का कि मैं 40 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन से आके मिलूं और कोई भी 15 लोग मैं अपने पसंद के चूज कर लूं। ठीक है, सही, वो कहीं से किसी ऑर्डर से भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कि आपने ड्रॉ करके निकाले हैं। ठीक है, सही है। जैसे लकी ड्रॉ होता है ना, पर्चियां होती हैं बहुत सारे बॉक्स के अंदर। ठीक है, एक रोलर के अंदर पर्चियां होती हैं बहुत सारी, आप कोई भी निकाल लेते हैं। तो एक तरीका तो ये, वो भी सही तरीका रैंडम रैंडम सैम्पलिंग का। एक तरीका ये है कि आप रैंडम नंबर टेबल जनरेट करते हैं। ठीक है, वो आपको इंटरनेट से मिल जाती है। मैं आपको जैसे बताती हूँ, फॉर इंस्टेंस लेट मी सी इफ दिस हेल्प्स एंड लेट मी शो यू रैंडम नंबर टेबल। So I have random number. Let's write something like this. So it says as a generator. So this is what it looks like. Right, it depends करता है आपकी population कितनी है. Right, ठीक है, सही है. This is a table of random numbers. Let us see this. ठीक है, सही है. So a random number table is a series of digits from 0 to 9 arranged randomly in rows and columns. So these are numbers arranged from 0 to 9 as demonstrated in the sample shown below. The table usually contains 5-digit numbers. Do we have 5-digit numbers? Yes, we do. So they are arranged in rows and columns for the ease of reading. Typically, a full table may extend over as many rows, as many as 4 or more pages. You will find random number tables in most statistical books. Random number tables have been in existence since 1927 and are generated by a variety of methods. So now how to use this? Now, how to use a random number table? This number is one from a variety of methods of reading numbers from random tables. Assume you have the test scores with a population of 200 students. Population कितने आपके पास? 200 students की. बच्चों ने कुछ टेस्ट दिए हैं, ठीक है, और population 200 students की. Now each student has assigned a number from 1 to 200. ये भी है, हर बच्चे को नंबर मिला है 1 से 200 का. We want to randomly sample only 5 of the students for this demo. हमें सिर्फ 200 में से, population में से 5 लोगों का सिर्फ sample चाहिए. Now, since the population size is a 3-digit number, which is this, population size is a 3-digit number, we will use the first 3 digits of the numbers listed in the table. First 3 digits listed in the table, यानी कि 3, 6 और 5. Right? ठीक है. Population चाहिए कितने लोगों की? 5 लोगों की. राइट, तो 5 लोग कौन होंगे? सिंपल रैंडम नंबर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मुताबिक हम उस 200 की पॉपुलेशन में से तीसरा कैंडिडेट लेंगे, छठा कैंडिडेट लेंगे और 5वां कैंडिडेट लेंगे. 3 तो हमने ये ले लिए. ठीक है, सही है. नाउ विदाउट लुकिंग पॉइंट टू अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द टेबल. अच्छा, सॉरी, एक मिनट, हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना. अभी तो हमारे पास एक पूरा रैंडम नंबर है. ठीक है, अब आंख बंद करके किसी भी नंबर पे आप रैंडमली क्लिक कर ले. सपोज करें मैंने क्लिक कर लिया इसके ऊपर 02743, सॉरी 02743 मैंने क्लिक कर लिया. ठीक है, हो सकता है समीना यहाँ पे क्लिक करे, हो सकता है फहद यहाँ पे क्लिक करे, ठीक है, हो सकता है लाइबा यहाँ पे क्लिक करे. सो आई हैव क्लिक, लेट अस सपोज हियर 02743. ठीक है, सही है, इससे मैंने क्लिक कर लिया. अब हमें क्या करना है? Now this location gives the first 3 digits to be 756. अब इन्होंने कौन सा चूज किया? इन्होंने चूज किया है 75636. That is third column and second entry. So let us follow this. This is third column and third column 1, 2, 3. Second entry is the 75635. ठीक है, तो हमें कितने टोटल चाहिए लोग? 5 लोग चाहिए ना, 5 का सैंपल चाहिए. तो 200 में से हम जब लोग सिलेक्ट करेंगे 5, तो हम एक 7वां शख्स सिलेक्ट करेंगे. विल सिलेक्ट द 5th पर्सन एंड विल सिलेक्ट द 6th पर्सन. ठीक है, याद रहे कि ऑल 200 हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में हम रैंडम नंबर्स के थ्रू से जनरेट करते हैं. तो आपने रैंडमली किसी भी नंबर पे क्लिक करना है, आंख जहां पे आपकी नजर पड़े वहां से आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो 3 लोग आपको यहाँ से मिल गए, द 7th कैंडिडेट, द 5th कैंडिडेट एंड द 6th कैंडिडेट. एक आपने ये ले लिया.
ठीक है, सही है, राइट। अब ये जो आपके पास चॉइस है 756 की, दिस लोकेशन गिव्स द फर्स्ट डिजिट्स टू बी 756, 756 वही है जो यहाँ पे है। अब ये जो है, ये 756 जो है, इज इट ग्रेटर देन 200? नो। Yes, it is greater than 200. 200 is total population, right? So we choose the next number in that column. अच्छा, हम इसको नहीं चूज कर सकते फिर? अगर इन सम, मतलब अगर ये पूरा फिगर जो है 756 200 से बड़ा है, तो फिर इसको हम नहीं लेंगे। फिर हम जाएंगे the next number in that column. Keep in mind that we are looking for numbers whose first three digits are from 001 to 200, representing students. ठीक है, यानी कि हर जो नंबर एक सेट में हमें गिवन है, जैसे फॉर इंस्टेंस 183 है, अगर मैं अचानक से इस पे मेरी नजर पड़ती है तो 18360, ये एक हो सकता है सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि अगर हम शुरू के 3 डिजिट ले रहे हैं तो 183 200 से लेस देन है। अगर सपोज करें कि रायान ने लिया है 49336, तो अगेन 493, शुरू के 3 डिजिट 200 से बड़े हैं, तो उसको हम फिर नहीं ले सकते। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हमने लिया था 7575635, ये लिया था ना हमने, तो हमें लेक्चर क्या बता रहा है, क्योंकि 756 200 से बड़ा है तो हम इसको नहीं ले सकते, तो मैं कॉलम में नीचे आना है। कॉलम में फिर 407 भी 200 से बड़ा है, 649 भी 200 से बड़ा है, 070 बहरहाल 200 से छोटा है। ठीक है, तो 070 का मतलब ये है कि जीरो तो नहीं होगा, हम जीरो 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 मेंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो 70 भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 7 एक सेलेक्ट कर लिया। फिर हम नीचे आएंगे, तो हमने अभी तक एक किया है, राइट। ठीक है, वी हैव टेकन जस्ट वन पर्सन सो फार। हमें पांच पूरे के चार पूरे करने हैं। फिर हम 371 देखते हैं, हम इसको भी नहीं ले सकते कि 371 इज ग्रेटर देन 200, 510 इज ग्रेटर देन 200, 290 इज ग्रेटर देन 300, 831 इज ग्रेटर देन 300, 038। अब हम यहाँ से हम थर्ड कैंडिडेट ले सकते हैं और एट कैंडिडेट ले सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, लेट्स सी इफ यू आर फॉलोइंग इट राइटली। So the second choice gives us the first digits to be 407, also too large. Continue down till the column till you continue down the column until you find five of the numbers whose first three digits are less than equal to 200. So less than or equal than 200 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। From this table we arrive at 070. एक हमने ये निकाला था, ठीक है, एक हमने ये लिया था, एक हमने ये लिया था, एक हमने ये लिया था, सही है। तो रिजल्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स कौन कौन से आए हैं? ठीक है, एक तो हमारे पास आया है, अगर हमने ये पूरा स्ट्रक्चर लिया है नंबर्स का, ठीक है, तो हमारे पास है 070 फर्स्ट डिजिट्स अगर हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं 070 में हम 70 लेंगे, नॉट 70 लेंगे, 70th स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। फिर 0831 में हम लेंगे, जीरो तो नहीं हम ले सकते, तो फिर हम 38 स्टूडेंट लेंगे, 38 स्टूडेंट, देखिए हमने वो भी ले लिया। फिर यहाँ अगर हमारे पास सीक्वेंस में अगला ये आ रहा है, तो फिर हम 45th स्टूडेंट लेंगे, हमने 45th भी ले लिया। फिर हमने लिया 55th स्टूडेंट, वो भी ले लिया हमने। और फिर हमारे पास आ रहा है 19428, ठीक है, तो इसमें फिर हमने 194 को ले लिया हमने, राइट। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 5 लोगों का सैंपल आ गया, ठीक है, सही। Now our sample set of students has been randomly selected, where each student has an equal chance of being selected, and the selection of one student did not influence the selection of the other student. ठीक है, सही है। बहुत से तरीके होते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के, ये भी एक तरीका है, तो इंटरनेट पे जाके टेबल ऑफ रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, कमिंग बैक टू द लेक्चर नाउ।
Okay, hang on now. The second thing which I gave you an orientation slightly a while back is systematic sampling, जिसमें कि हम पॉपुलेशन में से चूज कर लेते हैं कि हम लोग सैंपल उठाएंगे, ठीक है, तो हम either we'll take every fourth member or either we'll take every seventh member or 11th member. So is it just, anyone's, I would say, is it a person's freedom to go about finding a sample of 100 from a population of 200 and going about selecting every fourth person from the population till you achieve a count of 200? नहीं, ये अपनी मर्जी से नहीं होता है. हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं के रेशो. इसे हम कहते हैं के रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को विद द सैंपल. ठीक है, सही. हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है सबकी पॉपुलेशन अगर अलग है, सबके सैंपल अलग है, तो सबका के भी अलग अलग आएगा. अभी हमने जो फिगर्स फीडिंग की थी, उस मुताबिक के हमारा क्या आया है, 4 आया है. राइट, ठीक है. सो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमारे पास एक स्टार्टर होना चाहिए जहां से कि हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. So we need a sample of 100 people. This is the entire population. This is the entire population, right? So, but from here, we need just 100 people. So we need to start from somewhere, right? Let's see. Can we start from here? Can we start from here? Because we are selecting every fourth number till we get a total of 100. Okay. So let us see, do we have the freedom to have the starter from anywhere, or that too has some convention to follow? Okay, so we took any row. We took any row. There are rows 1, 2, 3, 4, all the way down, right? So he started with any row. So that's what you're doing. This is first element, second element, third element, fourth element. So the first person he selected from the entire population is the fourth person here. And then he'll take the fourth person, 1, 2, 3, 4. This person will be selected, right? The eighth one, then 1, 2, 3, 4. Then this person will be selected. Who's the 12th one? Then 1, 2, 3, 4. This person will be selected. Likewise, till you get a total sample of 100. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जब यहाँ आए 1, 2, 3, 4 और सपोज करें यहाँ पे, तो भी हमें फिगर नजर आ रहा है ना, सपोज करें ये शख्स एब्सेंट है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो क्लोजेस्ट नेक्स्ट होगा उसको ले लेंगे. ठीक है, सही है. हम छोड़ नहीं सकते उसको. इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट. जो नहीं था हमने रिप्लेस किया उसको अगले शख्स से. तो एक तरीका ये भी है कि आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर लें, जिसमें आपने कहा भाई चौथा शख्स नहीं था सीक्वेंस में, तो हमने उसको छोड़ दिया, हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किए. लेकिन विद रिप्लेसमेंट भी की जाती. विद रिप्लेसमेंट में क्या है कि आपने कहा कि दिस वाज द पर्सन हु शुड बी देयर, बट सिंस ही वाजंट देयर, सो वी हैव टेकन द नेक्स्ट पर्सन इन द क्यू टू मेक श्योर दैट वी आर सिलेक्टिंग द फोर्थ पर्सन इन द सीक्वेंस. फोर्थ तो नहीं था, तो हमने करीब करीब 5 को ले लिया, लेकिन अगला फिर आप फोर्थ ही उठाइएगा टिल यू गेट 100. लेट्स सी व्हाट दिस जेंटलमैन हैज टू से. राइट, ठीक है, बी माइंडफुल. ये हम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग एक ही चीज होती है. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो, दोनों का प्रीरेक्विजिट क्या है कि यू नीड टू हैव अ सैम्पलिंग फ्रेम, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट द पॉपुलेशन. ठीक है, सही है, इसका एक प्रीरेक्विजिट है.
The next thing we are talking about is cluster sampling. So let me share that when I was doing data collection for my respondents, my sample were working women, and I was collecting responses from working women who are residing in Karachi and Lahore. So I did cluster sampling as I was selecting respondents from two geographies, two regions. So cluster sampling हम generally जब लेते हैं most of the time research में, तो हम लेते हैं उस वक्त जब हम डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं लोगों से जो कि रिस्पॉन्डेंट्स हैं ऐसे जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं. ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग इसलिए की जाती है. हमने रीजन्स की बात ना यहाँ की है, हमने रीजन्स की बात ना यहाँ की है. वी टॉकिंग अबाउट क्लस्टर सैम्पलिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन्स नाउ. दैट्स द प्रॉब्लम. So this is a total population, and we've made clusters. So cluster one comprises of people living in street one, cluster two comprises of people living in street two, cluster three comprises of people living in the third street. Likewise, all the way, entire population is divided into clusters. हर street एक cluster है. ठीक है, तो हर street basically एक physical occurrence है ना. एक street number one ये, street number two ये, street number three ये. तो ये geographic, ये फिजिकल जोग्राफिक अकरेंस आपको दिखा रहा है. इसकी हम बात करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग की. Now within the cluster, do we have all females here? Cluster one. No. We have males, we have females, we have children, right? We have singles, we have couples. So within the cluster, the population is heterogeneous. Let's look at this cluster here. So it is likewise. It is likewise that all the elements in the cluster, they are all heterogeneous. Heterogeneous means different from each other. So all elements within the cluster are heterogeneous. Correct? Let's move on. Okay. So what we learned from here is cluster sampling में हमने पहले पूरी population को distribute किया into regional clusters और उसमें फिर हम simple random sampling करते हैं. For instance, आपको 200 sample size चाहिए. Cluster sample पहले तो हम लोगों को distribute किया into different clusters. Then we go about finding random samples from there. Hang on. Being done with simple sampling, simple random sampling, systematic sampling, cluster sampling, strategized sampling is
slightly difficult to understand, but it's not impossible. अगर आपको तीनों पिछली सैम्पलिंग समझ में आ रही है तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपको डिफिकल्ट चल इम्पॉसिबल नहीं है लर्निंग के लिए, ठीक है, बस जिम्मे रखिएगा इट इज ऑपोजिट ऑफ क्लस्टर। ठीक है, सही है। पहले से जेबी जेब ने बनाया कि स्ट्राटास का मतलब होता है स्फीयर्स, स्फीयर्स का मतलब होता है हिस्से। ठीक है, स्ट्राटिफाइड तो यानी कि हम इसके हिस्से करने जा रहे हैं, उसमें हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। सो वही पॉपुलेशन में से हमने क्या किया है, वी मेड स्ट्रैटम, वी मेड स्फीयर्स, वी मेड ग्रुप्स, group of all identical elements, all men, another stratum, another strata, another group, another sphere, where there are all women, another sphere, another strata, another stratum where I have all mother and children, all mothers, all men. ये हमने देखा ये ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें के सारे मेंबर्स आपस में होमोजेनियस हैं। इज इट जस्ट द ऑपोजिट ऑफ क्लस्टर? क्लस्टर मैंने क्या कहा था, विद इन द क्लस्टर एलिमेंट्स क्या है, हेटेरोजेनस। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में विद इन द क्लस्टर एलिमेंट्स, विद इन द ग्रुप, विद इन द स्ट्रैटम all elements are homogeneous, इसलिए कहते हैं it's just the opposite of it. Now the next thing to learn is stratified sampling has proportional sampling. ठीक है, एबीसी टाइप है, जो कि मतलब आप चाहते हैं कि आपके हर स्ट्राटा में से लोग लिए जाए, यहाँ से भी लिया 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 जाए। सवाल ये है कि क्या हम एक शख्स यहाँ से लें, तीन यहाँ से ले लें, चार यहाँ से ले लें, पांच यहाँ से ले लें और यहाँ से एक लें। सो इस बात का तयन कि हम हर स्ट्राटा में से कितने लोग लेंगे डिपेंड करता है कि वो स्ट्राटा का साइज क्या है। ठीक है, जैसे इस स्ट्राटा में सपोज करें कुल दो लोग थे, कुल दो लोग थे तो आपने एक लिया। इस स्ट्राटा में 11 लोग थे तो आपने तीन लोग यहाँ से लिए। ठीक है, इस स्ट्राटा में 50 लोग थे तो आपने फॉर इंस्टेंस पांच लोग यहाँ से लिए, आठ लोग यहाँ से लिए। तो आप जो सैंपल चूज करेंगे हर स्ट्राटा में से, वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है, उसका साइज कितना है। किसी स्ट्राटा में से कम लोग लेंगे, किसी में से ज्यादा लेंगे आप, राइट। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम एवरी 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 स्ट्राटा इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर सिलेक्टेड, यानी कि दो लोग यहाँ से लिए, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से। ठीक है, तो आपने प्रोपोर्शनल सैंपलिंग की है, राइट। ठीक है, सही है। We've taken the same number of people from the entire all different stratas.
और यहाँ पे पॉपुलेशन भी हर स्टार्टा की एक जैसी है क्या? लेट्स सो देयर आर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 14 15 these are 15 men 5 11 or 3 5 9 12 14 14 that is 15 5 4 9 12 13 14 15 9 with 15 women 5 4 9 12 13 14 15 हाँ देखिए स्टार्टर का साइज सेम है तो आपको दो लोग यहाँ से भी दो लोग यहाँ से भी राइट कुछ नहीं सब ठीक है फिर then we have 5 4 6 9 12 15 again 15 दो लोग आप यहाँ से भी तो स्टार्टर का साइज 15 लोग थे तो आपने दो यहाँ से दो यहाँ से दो यहाँ से does not look like 15 but like 4 7 8 9 10 so we can do it from there this also looks like a negative from there. So the commonality is that you're picking two people from every strata. That's ध्यान में रखिएगा the take home learning is that in stratified sampling the sample that you pick up will be heterogeneous. ठीक है सही this is the learning. The next thing he's talking about is multi-stage sampling. Multi-stage sampling में आप सैम्पलिंग कर रहे हैं एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार भी कर सकते हैं ठीक है इसमें कैद नहीं है लेकिन ये है कि आप और मल्टीपल तरीकों से भी आप कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस आपने क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करी नंबर वन ठीक है टू डिवाइड योर रिस्पॉन्डेंट्स इनटू टू रीजन्स ठीक है नॉट टू डिवाइड बल्कि आपको मालूम है कि आपके रिस्पॉन्डेंट्स दो रीजन्स में बसते हैं कराची और लाहौर में तो आपने क्लस्टर सैम्पलिंग शुरू करी अब उस क्लस्टर्स के अंदर लोगों को रीच आउट आप कैसे करेंगे उसके लिए आपने फॉर इंस्टेंस स्ट्राटास बना लिए ठीक है सही है और विद इन द स्ट्राटास आप जो लोग चुनेंगे वो आपने चुने सिस्टमैटिक सिंपल रैंडम के थ्रू भी कर सकते हैं और सिस्टमैटिक के थ्रू भी कर सकते हैं तो यू स्टार्ट विद स्टेज वन क्लस्टर यू मूव टुवर्ड्स स्ट्रैटिफाइड एंड देन यू मूव टुवर्ड्स सिस्टमैटिक दिस इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ठीक है पास रिसर्च की नौबियत ऐसी होती डिपेंड करता है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है
Let me stop sharing.